please complete your thought? That as a judge of the court sitting on this bench, I am entitled to ask. Of course, counsel. ask it. Let the So I'm counsel asking finish the his submissions. If I'm interrupted all the time, I'm sorry to say, sir, that is not proper. First of all, you are asking us to read a definition which does not say law but says Pakistani law in the specific context of Article 191. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन कराम, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। So let me understand what you are saying. So then the question, I will understand the question also. Maybe I'm not so quick at understanding. Can you please complete your submissions from your own mouth? Let us hear it. My submission is that the word. Let me first ask up to whatever you said. Please, now. can you I don't know the question has to follow a submission. Please, can you conclude your submission, Mr. Siddiqui? Otherwise, we'll have to spend forever on this case. Sir, may I? आप जरा अपना conclude कर लें submissions. May I just thank you, sir. Thank you. Sir, my submission. I can't follow what you're Yes, saying. Sir, my submission is that the word law, as it occurs in Article 191, includes acts of Parliament, and an indication of that, a clear indication of that, is given in the rules as framed in 1980, because the language, for example, used in Order 11 talks about save as otherwise provided by law. That clearly indicates that one is talking about statutory law. Okay, next point. Yes, Now, yes. just before you And carry on, that of course is buttressed by the definition. Just before you carry on Ji, to your sir, next point, ji. I think, if I may ask, in the 1956 Constitution, you will recall that there was a specific article which said that words and phrases not defined in the Constitution shall have the same meaning as in the General Clauses Act. Yes. That was in the 1956 Constitution. Is there any equivalent in the 1973 Constitution? As far as I can I don't. Mr. Faisal Siddiqui, you have I'm been not aware of it. You have been rightly stumped. Please persist Therefore, with your submissions. Therefore, my question to you is that here we have to look at the word law as used in Article 191, because the rule-making power is conferred by Article 191. So any definition, anything that goes in the Supreme Court Rules 1980 has to be consistent with the language of Article 191. I'll come to that. My short answer. Kindly you focus on that. Yes. What does law mean over Yes. there? My short answer to that. I think council. Sir, I'll just complete no, my I submission. think council is entitled to argue any which way they want to. Achha. Let us hear you. Yes. I have to hear you decide what you say, and if we have already formed opinions, we can reflect them in our judgments. Please Not a continue. question. Otherwise, we I'm will sorry, this is never not a question conclude of these forming hearings. An opinion. This is a question that as a judge of the court sitting on this bench, I am entitled to ask. Of course, counsel. ask it. Let the So I'm council asking finish the his submissions. If I'm interrupted all the time, I'm sorry to say, sir, that is not proper. I think the interruption asking- is of I'm learned asking- council. I'm Chale asking learned council, counsel- aap aage बढ़ें. I am asking counsel a question, which is my right to ask the counsel. If he wants to answer After it, he doesn't concludes answer his it. submissions with If the he greatest wants of to or respect. doesn't want to, that's his issue. That's not my issue. You understood the question now? My lord, I'll address that question. Let me just finish this submissions on competence and then I'll address this question. My lord, so I think there can be no doubt about what the word law means in Article 191 in the context type. But if your lordship requires a constitutional context, then subject to law also occurs in the Constitution, and it has been interpreted by your lordships of what that means, and that has been interpreted as meaning an act of Parliament. A recent judgment on this is a judgment authored by Justice Mansoor Ali Shah Sahab in the extension case, which is PLD 2020 Supreme Court, page 1. And your lordships are aware, if your lordships look at 243, sub-article 3, which contained the same language, although subject to law was not in the beginning but in the middle. The President, subject to law.
And His Lordship Justice Mansoor Ali Shah in para 27 of that judgment said this means an act of parliament. So there, another judgment, my lord, on this would be the Baskakar case. Now, if your lordship, as your What lordships case? are aware, Baskakar. जी, Baskakar. Baskakar. Okay. नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से ये समाअत चल रही थी और पाकिस्तान में ये पहली मरतबा ऐसे हो रहा है कि एक फुल कोर्ट जिस केस को सुन रहा है उसको बराह रास्त पूरी दुनिया में दिखाया जा रहा है। तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से ये चौथी समाअत आज चल रही थी जिसकी सरबराही जस्टिस काजी फायज ईसा साहब कर रहे थे और दौरान समाअत जस्टिस मुनीब अख्तर और काजी फायज ईसा साहब के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ, जिस पर आपने सुना मुनीब अख्तर साहब ने वाज़ेह कहा कि सवाल पूछना मेरा हक है। तो इस तरह की समाअत में अक्सर होता रहता है, लेकिन ये कुछ अनोखा ही वाक़या था जो पूरी दुनिया ने, चूँकि फ़र्स्ट टाइम ऐसे हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो समाअत है वो बराह रास्त दिखाई जा रही है। तो लोगों के लिए ये बड़ा हैरान कुन है ये जो देख रहे हैं लोग कि ये क्या हो रहा है कोर्ट के अंदर। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से कल तक की जो समाअत थी उसमें तमाम जितने भी जिन लोगों ने चैलेंज कर रखा था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को, उनकी तमाम लोगों की जो आर्ग्यू थी, जो उन लोगों की जो बातचीत थी वो मुकम्मल हो गई थी। अब वो उन लोगों का नंबर है जिन लोगों ने पीडीएम में जो लोग शामिल हैं जो इस बिल के हक़ में, अभी वो आकर अपने दलाइल दे रहे हैं। जिन लोगों ने इसको चैलेंज किया था उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। नाज़रीन इकराम, इसके अलावा अगर मुल्क के अंदर दीगर सियासी मसाइल पर बात की जाए तो मुल्क के अंदर इस वक्त इकनॉमिक क्राइसिस भी चल रहे हैं। मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, उसकी सबसे बड़ी वजूहत वो ये है कि इलेक्शन की डेट अभी तक अनाउंस नहीं हो सकी बदकिस्मती के साथ। सिर्फ इस हद तक कहा जा रहा है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते तक मुल्क के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन डेट अभी तक अनाउंस नहीं की। हल्काबंदियों का सिलसिला तो शुरू हो गया, उस पर कुछ लोगों के एतराज़ात भी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एतराज़ सामने आए हैं एक दो हल्कों के अंदर। अभी देखना है कि जब ये मुकम्मल होगी, जब इनको टाइम मिलेगा एतराज़ात उठाने का, उस पर दरख्वास्त देने का, तो वो तो टाइम ही बताएगा कि किन लोगों को कहाँ कहाँ पर एतराज़ है और कहाँ पर हल्काबंदियों में जो है मसला पेश आ रहा है। लेकिन अभी तक जो इतलात है वो यही है कि इलेक्शन की डेट अभी तक बहरहाल अनाउंस नहीं हो सकी। रात को सदाकत अब्बासी साहब के इंटरव्यू के मुतालिक मैंने पिछले व्लॉग में कहा था कि एक और तेल का खेज किस्म का इंटरव्यू आने वाला है, तो सदाकत अब्बासी साहब का भी इंटरव्यू रात को डॉन न्यूज़ पर नशर कर दिया गया। डॉन न्यूज़ पर इंटरव्यू देते हुए सदाकत अब्बासी साहब ने कहा कि मैं सियासत को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दिए हुए ओहदे को खैराबाद कहता हूँ और सियासत से अलहदगी का ऐलान करता हूँ। इससे पहले उस्मान डार साहब ने भी दुनिया न्यूज़ पर इंटरव्यू दिया था कामरान शाह साहब को। उस इंटरव्यू पर भी बड़े चर्चे थे और वो भी मामला ठंडा नहीं हुआ था, ऊपर से सदाकत अब्बासी साहब का भी इंटरव्यू आ गया। बहरहाल ये सिलसिला भी चलता रहेगा, रुकेगा नहीं, क्योंकि हालात ही इसी तरफ जा रहे हैं। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।